Good evening, students. I am Satyanarayana Saha. You are welcome to SNS Academy. Today, I am going to discuss Indian polity. I am Laxmikanth. Chapter 5, Preamble of the Constitution. Before, we have discussed fourth chapter, historical background of the Constitution, making of the Constitution, concept of the Constitution, salient feature of the Constitution, after that preamble of the Constitution. If you did not see the past videos, you have to see the past videos because chapters are interrelated. Share the link. If you join more, then motivation will come, and I put my best effort in teaching. So today we discuss about fifth chapter of Indian Polity, 7th edition by M. Laxmikanth, Preamble of the Constitution. Preamble जिसको प्रस्तावना बोला जाता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है. The American Constitution was the first to begin with a preamble. Many countries, including India, followed this practice. तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि प्रीएम्बल से शुरुआत होता है. मैनी कंट्रीज जैसा इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस, और इंडिया इसको फॉलो करता है. द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, और इसका विजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसका बारे में नरेट किया गया है. इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. N.A. Palkivala, an eminent jurist and constitutional expert, called the preamble as the identity card of the Constitution. N.A. Palkivala का मानना है जो प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का. आइडेंटिटी कार्ड तरह है, परिचय पत्र तरह है, वो परिचय कराता है. द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेस्ट किसका थ्रू से बेस्ट है, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन की तरफ से, और ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू. ऑब्जेक्ट रेजुलेशन कौन इंट्रोड्यूस किया था, पंडित नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था. एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में है, which added 3 new words: socialist, secular and integrity. ये प्रियम्बल में 3 ठो न्यू वर्ड इंक्लूड किया गया. कब? 42nd अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में. वो 3 ठो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी. The preamble in its present form reads. अभी जो preamble है इस फॉर्म में लिखा गया है जैसे we the people of India, हम भारतवासी,
We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, in this Constitution, we have to see nature of the state, first source of authority, India, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. यह है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इंडियन स्टेट का नेचर किस तरह है? वो सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सेकुलर सोशलिस्ट ये 42nd अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया. पहले था सोवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक था. आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, 4 चीज ऑब्जेक्टिव है. जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, किस तरह जस्टिस चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. फ्रेटर्निटी में एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द unity and integrity of the nation. These are objectives. After that, when it adopt is 26th day of November 1949. These are the things in the preamble. आफ्टर दैट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल. प्रियम्बल का क्या क्या इंग्रेडिएंट है? द प्रियम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट ऑफ कंपोनेंट्स. क्या क्या? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. इसका सोर्स कौन है? जो भारत में रहते हैं, इंडियंस. नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स, वो जो हम बोले, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स. और डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवंबर 1949. These are the 4 ingredients of the preamble: source, nature, objective, and date of adoption. Then next we have to discuss about the keywords. सोवरिन. सोवरिन मतलब क्या? सुपरमेसी, सुप्रीम पावर. उसको डोमिनेट करने के लिए कोई नहीं रहेगा. द वर्ड सोवरिन implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. वो जो रूल रेगुलेशन बनाएगा वो अपना खुद बनाएगा, वो किसका दबाव में आएगा नहीं. सुपरमेसी रहेगा. There is no authority
above it, and it is free to conduct its own affairs, both internal and external. Though in 1949, India declared the continuation of her full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth, this extra constitutional declaration does not affect Indian sovereignty in any manner. 1949 में इंडिया डिक्लेयर्ड हुआ था द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ. दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन डज नॉट अफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं हुआ था इंडिया सोवरेनिटी इन एनी मैनर. फर्दर, इंडिया's membership of the United Nations organization also in no way constitutes a limitation on our sovereignty. इंडिया किसी का दबाव में नहीं है, वो फुली इंडिपेंडेंट है. Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of foreign states. After that, socialist means we have to minimize the gap of rich and poor. Even before the term socialist was added by the 42nd Amendment in 1976, the Constitution had socialist content in the form of certain directive principle of state policy. In other words, what was hitherto implicit in the Constitution has now been made explicit. Moreover, the Congress party itself adopted a resolution to establish a socialistic pattern of society. कांग्रेस उस टाइम मतलब डिसीजन लिया था जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट किया जाए इन इट्स आभाडी सेशन एज अर्ली एज इन 1955 and took measures accordingly. Notably, the Indian brand of socialism is a democratic socialism, जिसको बोला जाता है democratic socialism and not a communistic socialism. Democratic socialism होना चाहिए, communistic socialism नहीं होना चाहिए. Also known as state socialism, which involves the nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property. Democratic socialism, on the other hand, holds faith in a mixed economy where both public and private sector coexist side by side. Public और private sector ये side by side होना चाहिए. As the Supreme Court says, democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पॉवर्टी, गरीबी, इग्नोरेंस, अज्ञता, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये सबको हटाना चाहिए. इंडियन सोशलिज्म is a blend of Marxism and Gandhism, leaning heavily towards the Gandhian socialism. ये गांधीयन सोशलिज्म को ज़्यादा फॉलो करता है. The new economic policy of liberalization, privatization and globalization has, however, diluted the socialist credential of the Indian state. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्या होता है ना, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनों प्रोमोट के थ्रू से डेवलपमेंट होगा. आफ्टर दैट सेकुलर मीन्स देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए. इन इंडिया डिफरेंट रिलीजियस पीपुल्स आर लिविंग. यहाँ पर बहुत सारे
रिलीजन का आदमी रहते हैं तो उसको सभी को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, यही सेकुलरिज्म है। द टर्म सेकुलर टू was added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. However, as the Supreme Court said in 1974, although the word secular state were not expressly mentioned in the Constitution, there can be no doubt that constitution makers wanted to establish such a state, and accordingly जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उन लोगों का भी लक्ष्य था जो यहाँ पर सब कोई मिलजुल कर रहें। आर्टिकल 25 एंड टू 28 गारंटिंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहना चाहिए, हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजन का ऊपर कुछ बैरिकेड नहीं रहना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडीज द पॉजिटिव concept of secularism. All religions in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the state. हम लोग का कंट्री में सभी रिलीजन को सेम दरवाज़ा दिया जाएगा और किसी का ऑफिशियल रिलीजन यहाँ पर नहीं है। आफ्टर दैट democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people. डेमोक्रेटिक स्टिपुलेट किया गया है जहीं पर सॉवरेन और पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर आदमी के हाथ में रहेगा, मोनार्च जैसा नहीं। यहाँ पर आदमी लोग का, यहाँ पर जो इनहेबिटेंट है उन लोग का हाथ में पावर रहेगा। डेमोक्रेसी इज टू टाइप्स, दो टाइप का रहता है, एक तो डायरेक्ट और एक तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपुल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, जहीं पर पीपुल जहीं पर वहीं का लोग, वहीं का आदमी वो क्या कर सकते हैं ना, सुप्रीम पावर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली एज द केस इन स्विट्जरलैंड की तरह। देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको बोला जाता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट ये चारों क्या है ना, डिवाइसेस है। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होता है ना, इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड थस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉ। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ऑफ 2 काइंड्स, जो सा पार्लियामेंट्री है और प्रेसिडेंशियल है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। Universal adult franchise, periodic elections, rule of law, independence of judiciary and absence of discrimination on certain grounds are the manifestation of a democratic character of the Indian polity. Indian polity का अंदर क्या होता है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रहेगा और ठीक समय में इलेक्शन होगा और रूल ऑफ लॉ रहेगा। जुडिशियरी को दबाव नहीं किया जाएगा, वो इंडिपेंडेंट रहकर राय दे सकेगा, एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द बॉर्डर सेंस, एम्बर्सिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी
के लिए ओनली नहीं है, बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सभी आदमी अच्छा से रह सकेंगे और सभी को मनपसंद जो वो अपॉर्चुनिटी कैरियर चूज कर सकेगा। द डायमेंशन was stressed by Dr. Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly on November 25, 1949 in the following way. क्या था ना, political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life, जो एक वे ऑफ लाइफ रहेगा, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। इंटीग्रेट लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन ए ट्राइनिटी। दे फॉर्म ए यूनियन, वो यूनियन में रहेगा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। They form a union or a trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. अगर एक नहीं रहेगा तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of few other the many. अगर एक को हटा दिया जाएगा तो सुपरमेसी आ जाएगा, few other many. Equality without liberty would kill individual initiative. In the same context, the Supreme Court observed in 1997 में Constitution envisions to establish an egalitarian social order, rendering to every citizen social, economic, and political justice in a social and economic democracy of the Bharat Republic. और रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब कोई सा भी हेरिडेटरी हेड नहीं रहेगा, जहाँ पर इलेक्टेड हेड रहेगा। जैसे इंडिया का हाईएस्ट और फर्स्ट नंबर 1 सिटीजन प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी। A democratic polity can be classified into two categories, monarchy and republic. In a monarchy, the head of the state, usually king or queen, जहाँ पर king नहीं तो queen रहेगा, enjoys a hereditary position, that is she comes to office through succession. Britain, in a republic, on the other hand, the head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period, USA. Therefore, the term republic in our preamble indicates that जहीं पर रिपब्लिक प्रियम्बल में इंडिकेट किया गया है दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड, जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंट। ही सी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली for a fixed period of 5 years. A republic also means two more things. One, vesting of political sovereignty in the people and not a single individual like a king. Second, the absence of any privileged class and hence all public offices being opened to every citizen without any discrimination. A republic also means two more things. दो चीज़ को वो समझा जाता है, वन वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेंटी ऑफ इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक द किंग। एक सुपरमेसी मतलब किंग का तरह नहीं, एक आदमी का सुपरमेसी नहीं रहेगा, सभी आदमी को
इक्वल राइट्स रहेगा, किसी को ज़्यादा नहीं रहेगा। एंड हैंस ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन, किसी को ज़्यादा सुपरमेसी नहीं किया जा सकता है। वही रिपब्लिक का इंटेंशन है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आफ्टर दैट जस्टिस, द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल एम्बर्सेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का एंगल से जस्टिस मिलना चाहिए, secured through various provisions of fundamental rights and directive principles. Social justice denotes the equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex and so on. सोशल जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, वो जौन सा भी जेंडर हो, जौन सा भी कलर हो और जौन सा भी रिलीजन हो. It means absence of privilege being extended to any particular section of the society. Absence of privilege being extended, किसी का ज़्यादा privilege नहीं दिया जाएगा. And improvement in the condition of backward classes. और एक ठो रहेगा जो कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कौन? बैकवर्ड क्लासेस and women. Economic justice denotes the non-discrimination between people on the basis of economic factors. It involves the elimination of glaring inequalities in wealth, income and property. A combination of social justice and economic justice, जो कि social justice और economic justice denotes what is known as distributive justice. Political justice implies that all citizens should have equal political rights. सभी का equal political rights रहना चाहिए, equal access to all political offices and equal voice in the government. The ideal of justice, social, economic and political, has been taken from the Russian Revolution. Russian Revolution कब हुआ था? ना 1917. कौन सा आइडियल ऑफ जस्टिस ये लिया गया था? रशियन रिवॉल्यूशन से. रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट था. आफ्टर दैट लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स व्हाट? लिबर्टी मीन्स absence of restraints on the activities of individuals. किसी का दबाव में नहीं आना चाहिए, फ्रीडम रहना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज. जहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगा इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप करना. The preamble secures to all citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith, and worship through their fundamental rights enforceable in court of law in case of violation. Liberty is elaborated. Liberty को elaborate किया गया है in the preamble is very essential for the successful functioning of the Indian democratic system. इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए. However, liberty doesn't mean license to do what one likes. इसका मतलब नहीं है जो कुछ सोचने से उसका अलाउ किया जाए. एंड हैज़ टू बी एन्जॉयड विद इन द लिमिटेशन. सभी का लिमिटेशन है, मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. इन ब्रीफ, द लिबर्टी कंसीव्ड by the preamble or fundamental rights is not absolute but qualified. जिस तरह इमरजेंसी केस में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, उसी तरह सभी चीज में लिमिटेशन है. द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 1789 में हुआ था. 1799 में हुआ था. आफ्टर दैट इक्वालिटी.
Equality, the term equality means the absence of special privilege to any section of the society. किसी को स्पेशल प्रोविजंस ज़्यादा नहीं दिया जाएगा. And the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination. The preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity. This provision embraces three dimensions of equality, जो कि civic, political और economic. और कौन सा इक्वालिटी में आता है? जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 abolition of untouchability, article 18 abolition of titles. So 14 to 18, these are right to equality. There are two provisions in the constitution that seek to achieve political equality. One, no person is to be declared, कोई सा भी is to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on grounds of religion, race, caste or sex. Two elections to the Lok Sabha and the state assemblies to be on the basis of adult suffrage. Article 326. The directive principles of state policy, जो कि आर्टिकल 39 है, secures to men and women equal. After that, fraternity. Fraternity means जो कि भाईचारा. Fraternity means a sense of brotherhood. रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेटिव एनकरेजमेंट होना चाहिए. The Constitution promotes the feeling of fraternity by the system of single citizenship. Also the fundamental duties, जो कि आर्टिकल 51A says that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities. मतलब यूनिटी लाने के लिए हम लोग को भाईचारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, सभी का साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा. The preamble declares that fraternity has to assure two things, जो कि dignity of the individual और unity and integrity of the nation. The word integrity has been added. ये member of the drafting committee of the Constituent Assembly. The phrase dignity of the individual signifies that the Constitution not only ensures material betterment and maintain a democratic setup, but that it also recognizes that the personality of every individual is sacred. सभी personality को important दिया जाएगा. This is highlighted through some of the provisions of the fundamental rights and directive principle of state policy which ensure the dignity of individual. सभी आदमी का dignity रहता है, dignity रहना चाहिए. Further, the fundamental duties also protect the dignity of women by stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women, and also makes it the duty of every citizen of India to uphold and protect सभी का sovereignty, unity and integrity, ये सब protect करना है. The phrase unity and integrity of the nation embraces both the psychological and territorial dimension. Psychological और territorial dimension को लेकर unity and integrity को सेप करना चाहिए. Article 1 of the Constitution describes India as union of states to make it clear that the states have no right to secede
from the Union, implying the indestructible nature of the Indian Union. It aims at overcoming hindrances to national integration like communalism, regionalism, casteism, लिंग्विज्म, सेक्शनिज्म एंड सो ऑन, ये सब रहना चाहिए. और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है. द प्रियम्बल एम्बोडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज. जहीं पर इसका क्या है और क्या वैल्यूज है यहाँ पर लिखा गया है. Political, moral and religious, on which the constitution is based. It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly. Constituent Assembly का क्या vision था, that one reflects in this preamble and reflects the dream and aspirations of the founding fathers of the Constitution. In words of Sir Aladi Krishnaswamy Iyer, a member of the Constituent Assembly who played a significant role in making the Constitution, the preamble to our Constitution expressed what we had thought or dreamed so long. जो कि इंडियन लोग का क्या विजन था, क्या ड्रीम था, उसका रिफ्लेक्शन प्रियम्बल में देखने को मिलता है. According to K.M. Munshi, a member of the drafting committee of the Constituent Assembly, the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic. ये भविष्य बताता है. पंडित ठाकुरदास भार्गव, another member of the Constituent Assembly, summed up the importance of the preamble in the following words. The preamble is the most precious part. It is the soul of the Constitution. और आर्टिकल 32 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ द ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ ए प्रॉपर यार्डस्टिक विथ which one can measure the worth of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह एडिफिकेशन किया गया है, मोस्ट प्रीसियस बोला गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है. सर अर्नेस्ट बार्कर, a distinguished English political scientist, paid a glowing tribute to the political wisdom of the authors of the preamble. He described the preamble as the keynote to the Constitution. He was so moved by the text of the preamble that he quoted it at the opening of his popular book, Principles of Social and Political Theory. M. Hidayatullah, a former Chief Justice of India, observed preamble resembles the Declaration of Independence of the United States of America, but is more than a declaration. It is the soul of our Constitution. ये Constitution का हम लोग का soul है, which lays down the pattern of our political society, जो कि हम लोग का political society का pattern को describe करता है. It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter. Preamble as part of the Constitution. As part of the Constitution, preamble एक Constitution का पार्ट है या नहीं. Sometimes about the Constitution, कौन जजमेंट देता है? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को फाइनल माना जाता है. इसका बेंच, जजेस बेंच डिसाइड करते हैं पार्ट है या नहीं है, और वो लोग जो जजमेंट लेते हैं वो कंटिन्यूटी करता है. वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज अबाउट द प्रीएम्बल इज टू वेदर इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. ये कंट्रोवर्शियल इशू है. इन द बेरुबारी यूनियन case 1960, the Supreme Court said that the preamble shows the general purpose behind the several
provisions in the Constitution and is thus a key to the minds of the makers of the Constitution. Further, where the terms used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance at interpretation may be taken from the objectives enshrined in the preamble. Despite this recognition of the significance of the preamble, the Supreme Court specifically opined that preamble is not part of the Constitution. उस समय सुप्रीम कोर्ट राय दिया था जो preamble कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. आफ्टर दैट द केशव नंदा भारती केस जो कि 1973 में द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट किया था अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट ऑब्जर्व दैट द प्रियम्बल वो लोग ऑब्जर्व किए और प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया. ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड and entrapped in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble in the LIC of India case, that the preamble is an integral part of the Constitution. Like any other part of the Constitution, the preamble was also enacted by the Constituent Assembly. But after the rest of the Constitution was already enacted, ये amendment किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है. हर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जा सकता है. द रीजन फॉर इंसर्टिंग द प्रियम्बल एट द एंड वॉज टू एंश्योर दैट इट वॉज इन कॉन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. while forwarding the preamble for votes, the President of the Constituent Assembly said, "The question is that preamble stands part of the Constitution." The motion was then adopted. Hence, the current opinion held by the Supreme Court that the preamble is a part of the Constitution, जो कि current Supreme Court का judgment का अनुसार preamble part of the Constitution है, in consonance with the opinion of the founding fathers of the Constitution. However, two things should be noted. The preamble is neither source of power to legislature nor a prohibition upon the power of legislature. It is non-justiciable, that is, provisions are not enforceable in courts of law. is non justiciable है, इसका कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है. अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं. The question as to whether the preamble can be amended under Article 368 of the Constitution arose for the first time in the historic केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में था. It was urged that the preamble cannot be amended. वहीं पर बोला गया कि preamble को amended नहीं किया जा सकता है, as it is not a part of the Constitution. The petitioner contend that the amending power in Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic elements of or the fundamental features of the Constitution which are enshrined in the preamble. Supreme Court, however, held that the preamble is a part of the Constitution. जब और एक राय आया जो preamble को part of the Constitution बोला गया, the court stated that the opinion tended by it, the Berubari Union, in this regard was wrong, and held that the preamble can be amended subject to condition, but no amendment is done on the basic features. In other words, the court held that the basic elements of the fundamental features of the Constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under Article 368. The court observed किया, the edifice of our Constitution is based upon the basic elements mentioned in the preamble. If any of these elements are removed, कोई सा भी elements अगर remove कर दिया जाए, the structure will not survive, and it will not be the same Constitution, or it cannot maintain its identity.
An amending power cannot be interrupted so as to confer power on the Parliament to take away any of these fundamental and basic characteristics of the polity. The preamble has been amended only once so far, in 1976, by the 42nd Constitutional Amendment Act, which has added 3 new words, जो कि 3 new words किया गया, जो कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल. दिस अमेंडमेंट was held be valid. So today this much. Thank you. You share, like, comment this video.